CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 14, Exercise 14.4. Exercise 14.4, Question number 1. Rewrite the following statement with if-then in 5 different ways, conveying the same meaning. अब हमारे को एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको इफ देन का इस्तेमाल करते हुए 5 डिफरेंट तरीके से लिखना है. चलिए, इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड. ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. इफ एन, फर्स्ट मेथड, इफ एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर then n square is also odd. A natural number is odd implies that its square is odd. Third, a natural number is odd only if its square is odd. For a natural number to be odd, it is necessary that its square is odd. Fifth, for the square of a natural number to be odd, it is sufficient that the number is odd. Sixth way, if the square of a natural number is not odd, then the natural number is not odd. Now proceed to the question number 2. Question number 2, write the contrapositive and converse of the following statement. If x is a prime number, then x is odd. Contrapositive क्या होगा? If x is not odd, then x is not prime number. कन्वर्स में क्या है, उसको उलट देते हैं, बस जो पीछे होता है उसको आगे लिख देते हैं. इफ एक्स इज ऑड देन एक्स इज अ प्राइम नंबर. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन. कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन. अब देखिए, पहले वहाँ पर ध्यान दीजिए, then they do not intersect in the same plane. ये नेगेटिव था, अब इसको पॉजिटिव बना दिए. If the two lines intersect in the same plane, then they are not parallel. Now the converse क्या होगा इसका? If two lines do not intersect in the same plane, then they are parallel. converse में केवल आपको पीछे का आगे लिख देना है, बस उलट देना है. थर्ड देखिए, समथिंग इज कोल्ड इम्प्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर. अब इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? इफ समथिंग इज नॉट एट लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड. द कन्वर्स क्या होगा इसका? इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर देन इट इज कोल्ड. Fourth, if you cannot comprehend geometry, you cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively. अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है. You cannot comprehend geometry if you do not know how to reason deductively. The contrapositive क्या होगा? If you know how to reason deductively, then you can comprehend geometry. The converse is, if you don't know how to reason deductively, then you cannot comprehend geometry. सॉरी. फिर देखिए,
x is an even number implies that x is divisible by 4. The contrapositive क्या होगा? If x is not divisible by 4, then x is not an even number. Converse क्या होगा? If x is divisible by 4, then x is an even number. Now come to the question number 3. Write each of the following statement in the form if then. First statement है, you get a job implies that your credentials are good. इसका क्या होगा? If you get a job, then your credentials are good. Second, the banana trees will bloom if it stays warm for a month. If the banana trees stay warm for a month, then it will bloom. Third, देखिए, a quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other. अब इसको हम कैसे लिखेंगे? If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. Fourth, देखिए, to get an A plus in the class, it is necessary that you do all the exercises of the book. If you get A plus in the class, then you do all the exercises in the book. Question number 4. Given statement A and B, identify the statement given below as contrapositive और कन्वर्स ऑफ ईच अदर. अब हमारे को दिया हुआ है, केवल आपको पहचानना है कि ये कंट्रापॉजिटिव है और कन्वर्स है. चलिए शुरू करते हैं. If you live in Delhi, then you have winter clothes. फर्स्ट दिया हुआ है, if you do not live winter class, if you do not have the winter clothes, if you do not have winter clothes, then you do not live in Delhi. ये कंट्रापॉजिटिव हो गया. क्यों? जो पीछे था, जो लास्ट में लिखा हुआ था, उसको हमने नेगेटिव बना करके लिख दिया. इफ़ यू डू नॉट हैव विंटर क्लॉथ्स, देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली. Now come to the second. If you have winter clothes, then you live in Delhi. अब उलट दिया, केवल कन्वर्स है. If you have winter clothes, then you live in Delhi. The answer will be converse. Now B. If a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal bisect each other. अब देखिए, ये तो स्टेटमेंट है. फर्स्ट दिया हुआ है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ये कंट्रापॉजिटिव हो गया. इसी का सेकंड देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज ए पैरेललोग्राम. आंसर विल बी कन्वर्स. कन्वर्स में केवल उलट देते हैं बस. That's all.